So yes, size does matter on Instagram. If you want to grow on Instagram and if you post some content on Instagram feed, reels or stories, then this video is for you. And if you want to save the growth and engagement of your Instagram page, then watch this video till the end. क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Instagram post sizes के ऊपर कि क्या Instagram के ऊपर डिफरेंट साइज में पोस्ट अपलोड करने से हमारे ग्रोथ या एंगेजमेंट में फ़र्क पड़ता है या नहीं, एंड हाउ टू इम्प्रूव दैट एंगेजमेंट. सो फर्स्ट टॉक अबाउट द इंस्टाग्राम फीड पोस्ट. तो इंस्टाग्राम फीड में हमारे पास मेनली 3 साइजेस हैं, द स्क्वायर, लैंडस्केप एंड द पोर्ट्रेट मोड. सो वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दीज 3 एंड वी विल सी दैट हाउ साइज मैटर्स ऑन इंस्टाग्राम पोस्ट. सबसे पहले लेट्स सी द स्क्वायर वन एंड द पोर्ट्रेट वन. तो इसके अंदर हम जब स्क्वायर साइज के अंदर अपनी कोई भी पोस्ट अपलोड करते हैं, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट कि अगर हमारी स्क्वायर पोस्ट को कोई भी अपने होम पेज पर या इंस्टाग्राम फीड में देखेगा तो इट विल लुक something like this. On the other hand, if you upload your photos in portrait size, then it will look like this. So what is the difference? The difference is कि पोर्ट्रेट साइज में हमारी पोस्ट ज़्यादा इंगेजमेंट गेन करेगी बिकॉज इट विल कवर द लार्ज एरिया ऑफ द स्क्रीन एज वी कंपेयर टू द स्क्वायर साइज. और अगर हम लैंडस्केप की बात करें तो लैंडस्केप में भी ऐसे ही होता है कि इफ़ समवन विल स्क्रॉल थ्रू योर इमेज, इसको इंगेजमेंट कम मिलेगी बिकॉज इट इज़ कवरिंग ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर इंस्टाग्राम फीड. सो लेट्स कंपेयर ऑल ऑफ दीज 3 साइजेस ऑफ इंस्टाग्राम फीड कि जिसके अंदर फर्स्ट वन इज द स्क्वायर. तो इसके अंदर जब हम फोटो को अपलोड करेंगे ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस ऑन अदर्स मोबाइल फोन व्हेन दे आर गोइंग थ्रू योर पोस्ट्स. पोर्ट्रेट में कुछ इस तरीके की एंड लैंडस्केप में कुछ इस तरीके की. सो हे यू कैन सी अ क्लियर डिफरेंस कि पोर्ट्रेट साइज में हमारी फोटोज या हमारी पोस्ट उस पेज पर ज़्यादा एरिया कवर कर रही है, जिससे हमारी फ़ोटो के अंदर हमारी फ़ोटो को इंगेजमेंट ज़्यादा मिलेगी एंड द व्यूअर विल इंटरेक्ट विद आवर पोस्ट. सो here we have learned that whenever you are going to post on Instagram feed, always remember to post in portrait size. So let's talk about the Instagram Reels. So Reels अपलोड करते वक्त भी हमें सेम कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखना है to cover the more area of the screen. So उसके लिए I am going to recommend you this screen resolution which is 1080 into 1920 pixels. When you are going to upload any reels in this size, it will gonna cover more part on the screen of the viewer. इसी तरीके से when you are going to upload the stories on Instagram, you have to follow the same resolution which is 1080 multiplied by 1920 pixels, which will give you more engagement. I hope you like this video. If you are going to follow these steps, it will definitely help you out in engaging more viewers or more followers on your Instagram page. I will see you in my next video, and yes, if you like any of the step from my video, tell me in the comment section of this video. And if you want any other video on any suggested topic, I will definitely make a video on your suggested topic. Tell me in the comment section of this video. Goodbye.